Today we are going to discuss file handling. Anybody wants to comment why we use files in programming languages? सर जब हम डेटा को अरेंज कर रहे होते हैं तो अरेंज हमारा कभी भी डेटा लॉस हो सकता है फाइल हैंडलिंग हमारा डेटा लॉस इतना ज्यादा नहीं होता Okay. प्रिडिक्टेबल नहीं होता Okay. File handling purpose is to reuse the data, save the data for later on purposes. If we are not storing our data in files, it means the data goes somewhere in the memory. Temporarily, it stays there. Once we close our program, we lose the data that we have calculated or we have asked the user to enter. Whatever we have done with the data, whatever manipulation we have done with the data, that will be lost. So if we want to store our data for later on use, we need files. Whenever we are handling files, there are some specific commands that we keep in mind कि जो हमारे file handling में चाहिए होंगी. One of the very common ones are open file, and then we have to give the file name, whatever the file name is. Purpose of these two is that within these a file name is being mentioned. Sometimes students put these while they are coding or while they are writing pseudocode. You don't write these symbols less than sign and greater than sign when you're writing pseudocode. It is just to prompt you that this is the file name in between. So open file name, and then you have to write the mode to open the file, and then you use close file command to close the file that you have opened. You can open many files at the same time, and then you have once you write on the file, you say write file and the file name, and then after comma you give the data that you want to write, and in most cases the data will be in a structure, and that structure can be a variable or an array. So that I'm giving just I'm giving an I'm writing over here identifier. Okay, and then whenever you want to read the data from the file and you want to store it in the RAM for a temporary basis, you might want to do one or the other thing, and you also give the identifier in which you want to store it. Now keep in mind that I'm writing the commands as a pseudocode terminology, and then there's a very common uh, command that is every now and then used is end of file function. So end of file function. The end of file function returns either true or false. So
If the file has ended, means the programming language has gone through all the lines of the file, it will return true. If um, at one time, at a specific point of execution of the code, if the file hasn't ended, all the file lines has not been read out, so every time this function executes, it returns either false or true, depending on is it the end of the file or not. So these are 5 basic instructions that we need to understand while we are uh, reading data from the file, writing data from the file. So the modes that we can open the file are write mode, pseudocode terminology है, please keep in this mind. VB में हमें ये write की जगह हम कुछ और words use करेंगे, वो मैं अभी यहाँ लिख भी देता हूँ. So when you want to write on the file in the pseudocode, you write, you use the word write, means open file, file name. You say, let me just erase this, and I say the word that you have to write in pseudocode. Open file, file name for write, for read, or for append. So the file will be opened for one of these modes. So these 3 are words that you use when you are opening a file, when you're writing a pseudocode. So when you are using VB.NET, as you learn programming language VB.NET, so for that for write you will be writing output, and for read you use the word input, and for append you use the word append. It's same. So output means writing on a file on a hard disk, and input means reading from a file stored on a hard disk, and append means writing one or more records at the end of the file which is already created. So when you use the write or output mode, the file actually gets created, and or if it already exists, it gets overwritten. If you are opening the file in input or read modes, the file will be read and opened from the hard disk, and one by one all the lines will be read from the file. And append means the file already exists in the hard disk, so it is open temporarily as in append mode, and the record will be inserted at the end. So for this case, file will be created or overwritten. Overwrite हो जाएगी अगर पहले से exist कर रही है तो. And for the read mode, file in hard disk is opened to be read, and in the append mode I'm drawing kind of a file shape that already some records exist, and a new record, if it is coming, it will be inserted at the end of the file. So file already exists. So this is the case for append. Now let's go to VB.NET and let's create a file, and then we'll append some data into it, and then we'll read data from it. So I'm creating over here. I'm going to store some data into. Today we are going to do a lot of things. Why? Because the file handling program actually covers all your parts. It is going to cover your
modular programming, it is going to cover your loops. It can cover conditions as well. I hope you guys are listening me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me create an array, dim, and let's give it a name data. And temporarily, I'm storing. I don't want to store lots of data at the Sir, moment. आप दीदी पे लिख रहे हैं? Sorry, I didn't share it. Okay. So I'm creating an array dim data 5 as a string. नजर आ रहा है ना आपको? जी सर, thank you. Okay. Yes, sir. And in the same row, because I don't want to ask user to enter the data, what I'm doing is I'm writing data over here because we need this data temporarily. In exam, this doesn't happen like this because examiner just gives us in part A that there is an array and this is the data already stored. Now write a program, a sub module to write data, and in part B it says, okay, write a program to read data. So assuming that in some data is already given. For example, let me show you in by showing an array on our whiteboard. For example, for example, um, let me take this whole thing that I've taught you at a new place. Okay, so this is an array, and this array has, it's a one-dimensional array, and it stores, for example, some names. I'm not putting this over here, Ahmed, and the contact number 11111, for example, and Bilal, and 7777 and Kamran 666 Waji 222222 and Rahim 333333. And what I'm doing here, sorry, I should have put all together. Let me put underscore. I'm putting an underscore which is separating the name from the contact number. So this a dash is also stored. Okay. And the length of contact numbers are same, all 6. Correct? Okay. I've done this. I'm going to use some built-in functions also. Now we want this data to be. This is in memory at the moment in an array, our data array, and I want to store it on a file in hard disk. I want to bring all this data into file on the hard disk. So what I'm going to do here now is I'm going to write this data. So how we do this, if I want data to be written at the time of declaration. So I say here, Asim, नहीं क्या क्या था वहाँ पर? It was Ahmed. Okay. चलो जो भी था Ahmed 1 2 3 4 5 6 and then I had this is the most difficult part in any
for any programmer, when the programmer wants to code the data. Bilal, and then let me take Kamran, 1 2 3 1 2 3, and then Rahim is 1 2 3 1 2 3, and how many names? Okay, then Waji, and for Waji, what 1 2 3 1 2 3 double quotes. So array has been declared and initialized as well, and we can see the size of the array is 5. So 0, this is 0 address, subscript 1, subscript 2, subscript 3, subscript 4. Now very simple. I want to call a program. At the moment I'm commenting it. I'm going to call for that. I'll write that program, subprogram. So I'm going to first write a program which I'll call, and I'll name it store on file. सही है? और because this array, you can understand, this array is a local array of the sub main program. मेरी क्लास हो रही है बच्चा. Okay. Sub store on file. I will be passing this array जो डेटा है, क्योंकि ये जो हम सब प्रोग्राम बना रहे हैं ना, डेटा सॉरी स्टोर ऑन फाइल, इसको इसकी एक्सेस नहीं है, इसकी एक्सेस ही नहीं है इसको. क्यों? क्योंकि ये जो एरे हमने बनाई है डेटा, ये सब मेन की लोकल एरे है, इसका स्कोप लोकल है. हाँ, अगर मैं ऐसे कर लेता कि मैं इसको यहाँ पर बना लेता तो इसका ग्लोबल स्कोप हो जाता. अब मुझे इसको पास करने की जरूरत नहीं होगी जब मैं कॉल करूंगा, क्योंकि अब देखिए मैं जैसे यहाँ लिखूंगा ना, देखो ये डेटा, ये देखो ये डेटा आ रहा है. तो लेकिन अगर मैं इसको मैं नीचे लिखता हूँ जहाँ पे एरे में लिखा हुआ था, ये ऐसे, तो अब अगर मैं डेटा लिखूं तो देखिए डेटा नहीं आ रहा. ये डेटा आ रहा है लेकिन ये इसको एक्सेस नहीं है, इसको पहले एक्सेस थी, अब एक्सेस नहीं है. सो फॉर दैट वी आर पासिंग इट एज अ पैरामीटर. सो जब हम पास करेंगे तो इसको, इस स्टोर ऑन फाइल को इसको टेम्परली कैच करना है. तो उसके लिए बाय वैल्यू हम एक एरे बनाएंगे. यहाँ पर मैं इसका नाम D1 रख रहा हूँ ताकि आपको फर्क पता चले कि दोनों में फर्क क्या है. और डायनेमिक एरे क्रिएट हुई है, यानी कि जब ये पास होगा तो ये एरे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगी कितने एलिमेंट्स की एरे यहाँ बननी है एज स्ट्रिंग. क्योंकि ऊपर से क्या पास हो रहा है, ऊपर से जब डेटा से क्या पास हो रहा है, स्ट्रिंग टाइप की एरे पास हो रही है. तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस प्रोग्राम में D1 के अंदर ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और फिर हम यहाँ पर D1 का लूप चलाएंगे और स्टोर देगा. वी नो द साइज ऑफ द D1, तो हमें पता है 5 है, लेकिन फिर भी हम बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं और उसके थ्रू हम देखते हैं कितनी दफा लूप चलना है. तो आई से फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 0 टू, ये जो D1 है इसकी लेंथ पता कर लेते हैं क्या है, D1 की लेंथ, और हमें पता है लेंथ 5 आ रही है, लेकिन सबस्क्रिप्ट, लास्ट सबस्क्रिप्ट क्या है, कोई बताएगा मुझे? मैं अभी बता चुका हूँ वैसे पहले. तो 4. शाबाश, लास्ट सबस्क्रिप्ट 4 है. अगर किसी को ये सबस्क्रिप्ट की बात समझ ना हुई हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ. जी सर. ये जो हमारी एरे है, ये डेटा, इसका पहला एड्रेस क्या है, 0. लास्ट एड्रेस क्या है, 4. तो ये जो 0 और 4 हैं और बाकी भी आ रहे हैं 1 2 और 3,
इन सब को हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं, एड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ, ये d1 डॉट लेंथ जो यहाँ फंक्शन बन रहा है, ये क्या रिटर्न करेगा, 5। तो हमारा प्रोग्राम जो चल रहा होगा वो चल रहा होगा कि कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। लेकिन हमें 0 से 5 तक चलाना है, नहीं सर, हमें चलाना है 0 से 4 तक। तो देखो ना, अभी तो अगर मैं इस प्रोग्राम को चला दूं तो प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। 0 पे तो ठीक है, ये एक्सेस होगा, 1 पे ये एक्सेस होगा, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये। लेकिन d1 डॉट लेंथ जो चीज रिटर्न करेगा यहाँ पर वो 5 होगा। तो 5 तो कोई है नहीं, तो हमें ये फॉर्मूला पूरा क्या बनाना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा d1 डॉट लेंथ -1। अब ये होगा, अब ये होगा कि ये लूप 0 से लेकर 4 तक चलेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे खाली कहता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं करने लगा हूँ d1 डॉट इंडेक्स, और नीचे जाके हम कंसोल डॉट रीड की लिख देते हैं ताकि आपको दिखा दूँ कि ये डेटा ऊपर से इस d1 में पास हो गया, d1 एरे, और d1 की हर इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक ये चलेगा और वो हमें आउटपुट दे रहा होगा। जैसा आई शो यू, लेकिन हम इसको अभी फाइल पे लिखाते हैं और वो फाइल भी आपको दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, ये देखिए नजर आ रहा है जी आपको, ये देखिए यस सर। ये जी डेटा। सर। तो ये वो डेटा ऊपर एरे थी, डेटा हमने उसको नीचे पास करवाया। जब हमने उसको नीचे पास कराया है तो हमें d1 में वो डेटा आ गया, वो सारा प्रिंट कर दिया। लेकिन हमने प्रिंट नहीं करना था, हमने क्या करना था, हमने स्टॉप करने दें मुझे, ओके। हमने क्या करना था जी, हमने तो प्रिंट फाइल के ऊपर लिखना है। ओके, फाइल के ऊपर सबसे पहले हम फाइल खोलेंगे, फिर से फाइल ओपन, यहाँ पे फाइल ओपन की कमांड ये आ गई, ठीक है। जब हम फाइल ओपन की कमांड यूज करते हैं तो इसमें सबसे पहले देखें आपसे क्या मांग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट आस्क्स यू फाइल नंबर एज इंटीजर, और फाइल नंबर एज इंटीजर नीचे लिखा है रिक्वायर्ड एनी फाइल नंबर, यूज द फ्री फाइल फंक्शन टू ऑब्टेन द नेक्स्ट अवेलेबल फाइल नंबर। फ्री फाइल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं लेकिन हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपली 1 कहते हैं क्योंकि इस पर हमारी जो फाइल खुली हुई है, जो हम खोलेंगे जिसका नाम भी अभी हम लिखने लगे, कॉन्टेक्ट लिस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो उसको जो हम नाम देने लगे हैं वो 1 ही होगा। ये इसको रीअकर कैसे करते हैं, एनी आइडिया है किसी के पास? पता नहीं कैसे, चलो बंद होगी दोबारा शुरू करेंगे। ओके, फाइल नेम, इसका नाम हम लिस्ट रख लेते हैं, और कॉमा ओपन मोड, जैसे मैंने बताया था कि ओपन मोड लिखना है, तो ओपन मोड। और हमने क्योंकि फाइल इस वक्त क्रिएट करनी है तो हम आउटपुट मोड में इस फाइल को खोलेंगे। तो जैसे हमने फाइल खोलेंगे तो वो डेटा लिखना पड़ेगा। अब हमने याद रखना है कि फाइल हम बाहर खोलेंगे लूप से, पहले हम फाइल खोलेंगे फिर लूप चलाएंगे और लूप के बाद हम क्लोज फाइल कर देंगे, क्लोज फाइल, और फाइल का नाम हमने 1 रखा था। ये 1 समझ लें इस लिस्ट का निक नेम है। अगर मैं ये निक नेम नहीं करता तो सुडो कोड में जैसे मुझे बार बार फाइल नेम लिखना पड़ रहा था ना, यहाँ हम सिर्फ मैं 1 यूज करूंगा, आगे भी 1 यूज करूंगा। तो बजाय इसके कि बार बार लिस्ट लिखने के, वी कैन यूज दिस integer number that is assigned as an id of list file. Okay, now I'm going to write the data of all the array d1 onto the file. तो वो लूप हमारा चलेगा और 1 बाय हम लिखते जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास मैं प्रिंट की कमांड यूज कर रहा हूँ, वैसे हम राइट की कमांड भी यूज कर सकते हैं, राइट लाइन, ये हम ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि आप प्रिंट की कमांड यूज कर लें। प्रिंट की कमांड में सबसे पहले वो पूछ रहा है कौन सी फाइल पे लिखना है, तो मैं कह रहा हूँ फाइल 1,
जो कि इसका नाम लिस्ट है, उस पर लिखो। और क्या ऑब्जेक्ट लिखना है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, D1 इंडेक्स। सो दिस कमांड विल डू व्हाट, दिस कमांड जब पहली दफा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्योंकि इंडेक्स में 0 है और D1 के अंदर अहमद 11 आ गया है तो ये फाइल पे लिखा जाएगा। और प्रिंट नहीं लिखूंगा बल्कि प्रिंट लाइन लिखूंगा क्योंकि वो सारा एक ही लाइन में आ जाएगा। तो प्रिंट लाइन की कमांड क्या करेगी, वो एक लाइन लिखेगी और फिर फाइल की नेक्स्ट लाइन पे चली जाएगी और वहां पे नेक्स्ट लाइन आती जाएगी। तो अगर प्रिंट करता तो प्रिंट, आई थिंक यू मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन और कंसोल डॉट राइट में जो डिफरेंस है वही डिफरेंस प्रिंट लाइन और प्रिंट में है। तो अगर आपको ये डिफरेंस पता है तो फिर ये सेम बात है, लेकिन ये फाइल हैंडलिंग के लिए है और ये कंसोल पे लिखने के लिए है। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स रन द कोड और फिर फाइल हम खोलते हैं और देखते हैं ये फाइल डेटा लिखा गया कि नहीं लिखा। सो आई एम रनिंग द कोड, स्टोर फाइल ऑन डेटा, ये प्रोसीजर कॉल हुआ, ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ और बंद हो गया। Now I'm going to open that list file for you and I'll show you वो कहाँ क्रिएट हुई है। मुझसे एक गलती हो गई, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। मुझे यहाँ किसी ने बताया नहीं, मुझे list.txt लिखना चाहिए था। So now I'm going to run that code again. Okay, so I'm going to search list.txt। आपको ज़रा नज़र नहीं आ रहा होगा कि मैं कहाँ सर्चिंग कर रहा हूँ। ओके जी, आपको नज़र आ रही है list.txt नज़र आ रही है? जी सर। ओके, अब मैं इस फाइल को खोल रहा हूँ डबल क्लिक करके और फिर आपको उसका स्क्रीनशॉट उसकी शेयर कराता हूँ। देखें, वो जो डेटा हमारे पास एरे में लिखा था वो सारा कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है। और ये याद रखेंगे ये सारा का सारा डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं जी, इस पे अपेंड कराते हैं, कुछ और रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, सो आई एम कमिंग ओवर हियर। सो इंस्टेड ऑफ बल्कि मैं एक सब प्रोग्राम अलग से बनाता हूँ इसके लिए। सो आई से हियर सब स्टोर अपेंड और यहाँ से हम बाय वैल्यू लिख लेते हैं डेटा एज स्ट्रिंग, जो भी पास हो उसको फाइल के ऊपर लिखवा दो। ठीक है जी, और सिंपली हम क्या करेंगे, वही कमांड जो ऊपर दी मैंने कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आपको वीबी कोड नजर आ रहा है ना, मैंने शेयर की हुई है फाइल ना, ये कर लिया। और सिंपली आई एम गोइंग टू यूज द प्रिंट। अच्छा, सिर्फ फर्क क्या करेंगे, इसको हमने अपेंडमेंट मोड यूज करना है और हम यहाँ लिखेंगे जी वही प्रिंट लाइन फाइल 1 और इसमें हम यहाँ लिख देंगे जो हम लिखवाना चाहते हैं वो हमारे डेटा के अंदर है। ठीक है, सो अब मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ और अब मैं प्रोग्राम कॉल कर रहा हूँ स्टोर अपेंड और एक नया नाम इसमें हम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फैसल और 999999। ठीक है, अब पहले वहां कितने रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स वहाँ ऑलरेडी यूज करते हैं और अब हम एक नया रिकॉर्ड फैसल भी उसमें स्टोर करने जा रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू रन, so you can understand जैसे ये प्रोग्राम कॉल होगा
तो एक्चुअली नीचे जो स्टोर अपेंड का प्रोग्राम हमने बनाया ये कॉल होगा, जो ऊपर फैसल 999 लिखा हुआ है ये डेटा में आएगा और फाइल ओपन होगी list.txt और अपेंड मोड में, और जो फाइल है 1 उसमें जो डेटा के अंदर डेटा पास हुआ है फैसल 99999 वो वहाँ पे लिखा जाएगा at the end of the file. So I've executed. Now I'm going to open that file and then I'll show you what has happened. Can you see Faisal 999 appended at the end of the file, inserted at the end of the file? Why it has not overwritten the whole file? Because the file was open in the append mode. And what it does, it adds the data at the end of the file. So clear hai ji ye? Okay. Now the last part. And the last part is I want to read all the data from the file. For that, I'm going to run a program sub get records. अच्छा जी, ये गेट रिकॉर्ड्स का प्रोसीजर है, ये हम बनाएंगे। इसको अब ऊपर से कॉल करेंगे। ऊपर से जब कॉल करेंगे तो फाइल नेम हम पास करना चाहते हैं। सो हर दफ़ा हम जब डिफरेंट फाइल कोई नाम भेजेंगे तो डिफरेंट फाइल खुलेगी। तो गेट record, please go and check records, or I will be sending the file name list, क्योंकि इस पर फाइल लिस्ट ही है तो आई एम सेंडिंग दिस। और यहाँ पे बाय वैल्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइल नेम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ एज स्ट्रिंग, ताकि आपको ये पता चल जाए कि फाइल भी पास हो सकती है। सो जो फाइल ऊपर से मैं जिस फाइल के रिकॉर्ड्स गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसका नाम पास कर रहा हूँ, वो नाम यहाँ आ जाएगा और हम इस फाइल को खोलेंगे। अब फाइल ओपन, नाम 1 रख दो और जो फाइल का नाम है वो वेरिएबल फाइल नेम में स्टोर है, और इसको ओपन करो किस मोड में, ओपन मोड डॉट रीड में, यानी कि इनपुट, एंड देन आई क्लोज। मेरी आदत है कि जैसे मैं फाइल ओपन करता हूँ तो मैं उसे क्लोज भी कर देता हूँ ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे मार्क्स ना कटे। So that's what I try to teach my students. So in exam you should be able to write down at least this, बीच वाला पार्ट अगर ना भी हो रहा हो तो ये तो जरूर हो जाए। Okay जी, continue करते हैं आगे। So as I was telling that if you are able to write out of 5 you get around 3 marks तो बनते हैं। 1 mark for the 2 mark for the file header, and 1 mark for this. So out of 5, 3 marks to bante hain. So what we want to do is we want to get all the data into an array. We want to display it, we can display it, we want to write in the array, we can write it. दोनों चीजें करके देख लेते हैं। पहले array में ले आते हैं और array को लिख लेते हैं। We can directly write from the file on a console also. So if I want to bring it into an array, what I have to do is I want to create an array, assuming I create an array, and at the moment I know it by default what is the size of the array. It has 5 records. So I'm creating an array of D1 index 5 का मतलब है 6 records as string, and it has been created. And what I will do is I'll run a loop for 0 till 5 for index equals to 0 to 5, and I'll just one by one read the data into arrays location D1
index. I can do like this also. Read line. What do we call it? Line input. Okay. You can write like this. You can also write like this. Right, line input 1, comma this. Both are same thing. So what is happening? There's a problem in this way. Line input. Line input. Sorry. D1 index. It is not working that way. Okay. उसी तरह से कर ले जैसे पहले किया था मैंने, वैसे करना चाहिए इसको उस तरह भी. Okay. So by executing this line, what will happen? The first name that you know that Ahmed11 written in the file will go into D1 जो array यहाँ मैंने बनाई है उसकी 0 index के ऊपर Ahmed11 आ जाएगा और फिर ये continue रहेगा. So by doing this, all the data will come into this array. Now I'm going to put a breakpoint at this point, and then I'll run this code, and I'll show you that all the data from the list file has come into this file. I'm running it. आखिरी नाम याद है क्या था? What was the last name in the file with contact number 9999? So Faisal 99. Faisal 99. Good, Iman. मैं just check करना चाह रहा था कितना follow कर रहे हो सब लोग. Okay, let's create that window, variable watch window, और देखेंगे हमारे data क्या आ रहा है. Okay, यहाँ पर हम D1 बना लेते हैं. देखिए 0 के ऊपर नजर आ रही है ना आपको, डेटा नजर आ रहा है सारा. जी सर. देखिए उस फाइल में से डेटा उठा है, Ahmed11 यहाँ पर आ गया, और जो 5th लोकेशन है यानी कि सबस्क्रिप्ट 5th, लेकिन एड्रेस जो है 6th लोकेशन बन रही है, वहाँ फैसल 99 आया. सो ये डेटा जो भी सारा आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये वहाँ से उठकर आया है हमारे पास फाइल में से. ये जो यहाँ पर हमें डेटा नजर आ रहा है, ये वाला, ये सारा कहाँ पे था? ये फाइल में था. ये फाइल से उठकर हमारे पास यहाँ पर एरे में आ चुका है. अब यहाँ से हम इसको whatever we want to do we can do. If I want to print on the console, I can print it. अगर मैं डायरेक्टली भी कंसोल एरे में ना लिखना चाहता, मैं डायरेक्टली प्रिंट करना चाहता, तो फिर मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं थी. I would have only done like this, console dot write line, that's it. So एक एक लाइन फाइल से रीड होती जाती और कंसोल पे लिखी जाती. Now a little time before, like 2 or 3 weeks back, Khadija asked me to solve a question. I just kept that in my mind when I will be teaching you guys file handling. I'll solve that question over here. Now the question is that the examiner says there are some records in the file, and the programmer wants to code in a way so that when the code runs, it finds out how many records are there, how many lines are there. You know, at the moment in the file that we have created list, there are 6 rows. Ahmed से लेकर कामरान तक
छह रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पर, हमें तो पता है, लेकिन let's code it so that program tells us how many lines are there. So how we are going to do this? Same thing, no big deal. I'll open the file name lst file close करेंगे और हम लूप चलाएंगे. लेकिन लूप कैसे चलेगा? लूप चलेगा हमारा do while, जो फंक्शन हमने अभी तक यूज नहीं किया, do while not end of file. हम क्या लूप चला रहे हैं? Keep on running the code inside this loop until the end of the file. As the file ends, come out of the loop. So this is the purpose of this block that I've written. And in this block, what I will do, I'll count how many lines there. So you know that to read the file line, what command we use? We use this line instruction, line input 1. This is the command to read the whole line, and because I don't want to store, I can skip it, or I can create a variable as it is written in the mark scheme, a dummy variable. Even if I don't create it, that doesn't creates a problem. So I can create any dummy variable as string, and I will be storing every line. Sorry, कहाँ लिख दिया हमने? I will be storing every line in this dummy variable, but because the data that I'm reading because of this line input has nothing to do with my purpose. My purpose is only to count lines, but this line does what? It reads data. So when it reads, it goes somewhere. So where it is going into dummy variable, because it will get overridden. As I'm saying, even if I don't write this, it is going to read line. So line input does what? Let me annotate on the screen. Line input does this, that this line input command does what? It let's suppose some data is written over here. So it reads character by character all the characters of the line, and when it reaches at the end of the file, it comes to the next line. So then again, when line input command comes, it reads all the stream of characters that are being typed over here or stored. When it comes at the end of the file, it finds, we call it carriage return. Carriage return. ASCII value इसकी है 13. So it is kind of a end of the line character. So when it finds it, it goes to the next line. So line input does what? It reads all the character at the line it is residing at the moment, and when it finds the carriage return character, it goes to the next line starting point, and then it reads next line whenever it is asked to read. So line input is going to read all the characters whatsoever. So either I store it or I do not store it. It doesn't affect my code at the moment, because my purpose is not to read data. My purpose is to read all the lines. So the next thing is I'm going to create a variable count lines as integer, which is going to store how many times the loop has executed. So here I'm going to say count lines is equals to count lines plus 1. Exam point of view से if you initialize this count line variables as 0, अच्छा हो जाता है. जितने भी variables आते हैं उनको आप initialize ज़रूर कर लें. So after the execution, I'm going to print this console dot write line count lines वेरिएबल, तो बता देगा कितनी लाइनें हैं वहां पर. हमें पता है 6 हैं, लेकिन हम कोड से कह रहे हैं वो फाइंड आउट करें. कंसोल डॉट रीड की. सो लेट्स रन दिस कोड एंड सी व्हाट हैपेंस नाउ. पहले तो उसने हमें सारा डेटा एरे में ले आया था, प्रिंट करना चाहते तो प्रिंट भी कर सकते थे. तो अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ,
तो आप देख सकते हैं ये इस वक्त जो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, कितना आ रहा है लिखा हुआ स्क्रीन पे? 6, क्योंकि इसने 6 लाइंस टोटल जो हैं वो रीड की हैं from the files. This is all about our file handling stuff. So you can see over here, you have seen which concepts actually you have seen. You have seen how to declare an array. You have seen the modular programming concepts, all those sub-programs that I've created. You have seen that how we can call and how can we pass an array. याद रखें ये हमने ऊपर array बनाई थी, और जब array को pass करते हैं VB में तो parenthesis लगाते हैं, सिर्फ object का नाम लिखते हैं. And when we want to um, pass an array as parameter, so at in the header of the program, how do we declare the temporary array? We declare it like this. तो ऊपर जितने भी elements pass होंगे वो इसमें array declare होके वहाँ आ जाएंगे. This is the code to write all data. This is the code to write at the end of the file, and this is the code जो हमने बनाया है to count how many lines are there in an array. और इससे पहले हमने इसको modify किया है, तो उसमें हमने लिखा था how to fetch all the data from the file into an array. कोई question है तो बता दें. नहीं, चलें. ये दोनों वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा. सॉरी, ये आज का लेसन पूरा शेयर कर लूँगा. तो फिर आप इसी को, जिनको याद है वो अभी भी इसी को एज इट इज़ कोड कर लें, फ़ौरन रीइंफोर्स हो जाएगा. और एक चीज़ याद रखें, आपका जो आगे एग्ज़ाम आ रहा है, ये आपका अप्रेजल असेसमेंट्स हैं. आप इसको बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है. आसान सा पेपर होगा. मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि हम इस वक्त पेंडेमिक में हैं, किस तरह की हम सिचुएशन में इस वक्त अपनी सारे काम कर रहे हैं. तो हमें भी पता है स्टूडेंट्स किस तरह से कंडीशंस में इस वक्त हैं. तो यू जस्ट वर्क हार्ड, perform your duties. Your duty is to relax, enjoy and study, and inshallah things will be better. So don't be scared of the paper. बस आप तैयारी करें और you will see that it will not be difficult if you would have worked hard. ठीक है जी. Okay, अल्लाह हाफिज़.